Hi there, welcome back to Being Your Ray. So, for today's episode, I want to link it with something I mentioned in the previous episode about how my best thinking got me nowhere. And so now I trust in something higher because मुझे समझ में आ गया है आई एम नॉट दैट स्मार्ट मेरा दिमाग बहुत कम जगह पे ही मतलब इट इज नॉट बुद्धि इट्स नॉट इंटेलिजेंस इट्स जस्ट मन तो फिर आई कैन take decisions in a better way now than I did in the past. So, I wanted to talk about being very calculative about your life because I have been that person and the aftermath of it and how stressful it is. You are constantly in a state of worry, and that's not something I would want for anyone. So, yeah, let's get started. Personally, I was always that person who would have these habit trackers and these task lists, and I just wanted to be so sure about every moving part of my life that I think I was micromanaging the whole thing. So I think micromanaging is the perfect word because you feel that way when you're working under someone, but जब तुम खुद के साथ वो कर रहे हो, think of two selves. One is your physical self and one is your spiritual self. So when your physical self takes over so much and it starts to dictate every single part of you without having थोड़ा भी space for your spiritual self to express itself and like have that gap, तो it starts to feel like micromanaging, it starts to feel suffocating. And at the end, I knew the amount of plans I made, the all the calculations, वो पहली बात तो मैं पूरी तरह से फॉलो कर नहीं पाती थी. आई कुड ओनली लाइक फॉलो 1% ऑफ इट और कंसिस्टेंटली तो छोड़ ही दो, वो तो अलग ही टॉपिक है। वो सिर्फ़ मुझे मोमेंटरी खुशी दे देता था कि चलो ये प्लान है हाथ में, दिस सीम्स गुड एंड डूएबल एंड एट लीस्ट आई हैव समथिंग टू फॉलो नाउ, तो अभी मैं चैन की साँस ले सकती हूँ। Only to realize an hour later, none of my plans are being followed, or even if I'm following them, I'm not getting the kind of results I wanted, which is why I made the plans in the first place. क्योंकि तुम बनाते तभी हो ताकि तुम उसका आउटपुट देख पाओ, पर जब वो आउटपुट उस तरह से नहीं आता है जिस तरह से तुमने इमेजिन किया था, देन यू जस्ट फील लाइक व्हाट वाज ऑल दिस फॉर. इससे अच्छा तो आई वुड हैव जस्ट गॉन विद द फ्लो. सो एंड देयर आर टू थिंग्स अबाउट गोइंग विद द फ्लो. एक तो है कि तुमने गिव अप कर दिया है, वो वाले फ्लो की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो फ्लो नहीं होता है. एंड एक होता है कि यू ट्रस्ट ऑन समथिंग हायर, यू हैव फेथ ऑन, क्या बोलते हैं, your inner wisdom more than your mind. So, yeah, now I am in a place where I can be like, I don't control a lot of things in my life. एक चीज़ है जिसके बारे में आई एम वेरी पर्टिकुलर, विच इज़ माई रीडिंग हैबिट एंड माई मेडिटेशन. वो होना चाहिए सुबह शाम. शाम को आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना एक्सरसाइज और मेडिटेशन करूँ. कभी कभी नहीं हो पाता है, बट या एटलीस्ट मॉर्निंग में आई मेक श्योर दैट आई डोंट मिस अ डे. एंड धीरे धीरे आई विल लाइक स्ट्रेंथन माई इवनिंग रूटीन एज वेल. बट आई एम हैप्पी एटलीस्ट दिन का एक बार तो मेरा फिक्स हो चुका है 30 minutes ऑफ माई एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन. सो या ओनली लाइक उतने कम अमाउंट में भी आई कैन सी सो मच चेंज. मतलब I'll tell you the reason why I am crazy about all of these topics and meditation. It's because it is not limited to like few minutes of your day. वो जो तुम थोड़े मिनट बिताते हो खुद के साथ, दैट इज कैरीड विथ यू थ्रू आउट. एंड दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तुम अपने पूरे दिन में कैरी करते रहते हो. सो इट्स नॉट लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक टाइम. द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इट आर ब्यूटिफुल, और दैट इज द थिंग दैट मेक्स मी कीप डूइंग इट. क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं ये चीज़ करती हूँ, माय डे ऑटोमैटिकली बिकम्स बेटर. लाइक 30 मिनट्स मेक्स अप फॉर लाइक द 24 आवर्स ऑफ माय डे. एंड आई जस्ट वांट टू बस्ट ऑल द मिथ्स अबाउट
spiritual people don't think about material stuff and things like that. It's not that way. Actually, spirituality helps you live a better life and take care of your responsibilities, your material responsibilities a lot better. क्योंकि अगर तुम मुझे spirituality निकाल दोगे मेरे अंदर से, I'm not that equipped. I don't know the shit. So yeah, this thing gives me like all of my tools so that I can live throughout my day without stress, without doubts, and all of those crazy, overwhelming stuff. So, yeah, anyway, talking about controlling and calculating and stuff like that. One of my friends, like both of us are huge Mahabharat fans. So they were just mentioning about how there's this one dialogue by Krishna where he just laughs at all of our plans and he just goes that whatever you think, जो भी तुम ये प्लान बना रहे हो या फिर जो जो भी तुम सोच रहे हो एट द एंड होगा तो वही जो मैं चाहता हूँ. सो गॉड्स विल इज द ओनली थिंग दैट इज दैट एक्चुअली मैटर्स. एंड तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारे कर्म है. उसका आउटपुट या फिर उसका रिजल्ट इज इन गॉड्स हैंड्स. Like he will decide the timing, he will decide based on whatever how deserving you are या जो भी है वो उनके हाथ में है. बट दैट डज नॉट मीन कि तुम कर्म करना ही छोड़ दो. वो तो तुम्हें अपना पार्ट करना है. बट वो जो जर्नी है दैट विल टेस्ट यू कि तुम कैसे भाव से वो काम कर रहे हो. एंड द काइंड ऑफ या द इंटेंशंस एंड the motives that you have behind it. I think it's all synonymous. I'm not finding the words to describe. बट हाँ, वो चीज़ ने मुझे ऐसे वो जो एक सरेंडर वाली चीज़ रहती है, that I have been able to understand a lot better now, because it would really freak me out when I did not have a plan and I just felt like, so that quote that people talk about, if you don't have a plan you have a plan to fail या ऐसा कुछ. And I don't vibe with it. So yeah, every time I've had a plan it hasn't really helped much. So I would rather be surprised by life and by the plans it has for me, क्योंकि at the end काफ़ी सारे वेरिएबल्स ऐसे भी हैं जो कंट्रोल में नहीं है हमारे, तो वो अकाउंट करना भूल ही जाते हैं हम. So yeah, anyway, I had also written something on the similar lines in my journal, control versus surrendering को लेके. So I'll read that out now. And yeah, I think then we can end this audio. ओके, सो आई हैव द एंट्री इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई रियलाइज कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी है. बट स्टिल देर इज़ लाइक दिस वन पार्ट दैट आई वांट टू हाईलाइट. जब मैं पढ़ रही रहूँगी तभी मैं बता दूंगी कि दिस इज़ द वन, लिसन केयरफुली वाला थिंग. बट या बाकी जस्ट बेयर विथ मी इफ यू फाइंड इट repetitive. I'm sorry. But yeah, let's go ahead. So every time you try to control everything by overthinking and using your mind excessively to come up with perfectly laid out plans, you are going against your nature. It's like resisting the natural flow of life. In the end, none of your plans can be executed the way you imagine them to be, because there's always something bigger at play which you can't account for. You can never be prepared for something that your mind can't conceive. This is the part that I want you to listen carefully, and the one that I was focusing on when I started reading. I'll repeat it again. You can never be prepared for something that your mind can't conceive. So anything that is beyond your level of imagination won't be a part of your plans. I repeat, so anything that is beyond your level of imagination won't be a part of your plans. And that's where planning fails. Whereas surrendering equals to being open and receptive to whatever comes your way.
something possibly better than your plan that is limited by the perceptions of your mind, something a lot more present and free from the worries of your mind, something way more powerful and intelligent than your mind. Don't get in its way, get out of the way, and let the magic unfold. So, yeah, that's it for the journal entry. I hope you liked it. And if you made it this far, thank you so much for listening. And I'll see you in the next one.